बात और वो चीजों को इस्तेमाल करते हैं इन डिजीज को ट्रीट करने में अपने पेशेंट्स को। Next, let's talk about heart disease. अब हम बात करेंगे हार्ट डिजीज की। Current projections suggest that India will have the largest cardiovascular disease burden in the world. इस वक्त जो प्रोजेक्शंस है वो कहता है कि इंडिया का जो बर्डन है, जो मतलब बोझ है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का, वो सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। You're leading in too many categories. बहुत सी कैटेगरीज में इंडिया जो है वो वर्ल्ड को लीड कर रहा है बीमारियों We में। need to change this. हमें उसको चेंज करना है। There's a tremendous opportunity for you. बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। Again, it occurs 10 to 15 years younger in Indians than it does in the West. इंडिया में बाकी देशों के मुकाबले में जो हार्ट डिजीज है वो 10 से 15 साल पहले शुरू हो जाती है। So again, we look at that aging population and see how important it is to prevent heart disease if we can. और फिर से अगर हम लोग जो है अपनी वो एज के जो पॉपुलेशन ग्राफ को देखेंगे तो हमारे इंडिया में समझ में आ जाएगा कि बहुत से बढ़ते उम्र के लोगों को एक प्रॉब्लम होने वाली है। It's estimated that 45 million have coronary artery disease in India. ये एस्टिमेट है कि इंडिया में 4.5 करोड़ लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। And high blood pressure has been increasing steadily for 50 years. और हाइपरटेंशन जो है, हाई ब्लड प्रेशर पिछले 50 साल से धीमे-धीमे बढ़ रहा है। One of the things that is very important for the heart is the production of energy. हमारे हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है एनर्जी का प्रोडक्शन। In the mitochondria, which are the little energy packets of every cell of the body, is a necessity for coenzyme Q10. माइटोकॉन्ड्रिया जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे सेल्स का, उसके अंदर पॉकेट्स होती हैं, वो बहुत जरूरी है वहाँ उसके लिए कि कोएंजाइम Q10 जो है वो उसको मिलता रहे। The heart uses massive amounts of energy. हमारा जो दिल है उसमें बहुत सारी एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है। In just 1 year, the average heart beats 30 million times. एक साल में एक दिल जो है वो 3 करोड़ बार एक हार्ट जो है वो बीट करता है। In an average lifetime, it's about 2 billion. Yes, in an average lifetime, over 2 billion. एक एवरेज लाइफ टाइम में लगभग 2 बिलियन। If it takes a 5-minute break, you're dead. अगर दिल केवल 5 मिनट के लिए धड़कना बंद कर दे तो आप मर जाएंगे। So we need that energy on an ongoing basis. तो वो एनर्जी जो है वो ऑनगोइंग बेसिस पे कंटिन्यूअसली चाहिए। As you can see in the graph on the right, from age 20 on, our bodies actually produce less amounts of coenzyme Q10. जैसा आप देख रहे हैं इस ग्राफ में कि 20 साल की उम्र के बाद धीमे-धीमे हमारे बॉडी में कोएंजाइम Q10 का प्रोडक्शन जो है वो अपने आप कम हो जाता है। Now, some of the main foods are actually meats and some nuts that actually where we get our coenzyme Q from in our diet. हमारे डाइट में मीट से और कुछ नट्स जो होते हैं उनसे कोएंजाइम Q10 मिलता है। So vegetarians tend to have a more difficult time maintaining their CoQ10 levels. तो जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनको दिक्कत होती है अपने CoQ10 लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। Interestingly enough, people who are diabetic and people who have liver disease oftentimes have very low levels of CoQ10. जिन लोगों को लिवर की प्रॉब्लम होती है और डायबिटीज होती है उनके ब्लड में, उनके बॉडी के अंदर बहुत लो लेवल्स होते हैं कोएंजाइम Q10 के। So we talked already about how many people there are in India with both of those problems. और इंडिया में हम लोग ऐसी बात कर चुके हैं कितने लोग ऐसे जिनको लिवर प्रॉब्लम्स हैं और डायबिटीज प्रॉब्लम है। In addition, people who are on the statin drugs and beta blockers for either high cholesterol levels or for high blood pressure, those medicines alone lower CoQ10 levels. जो लोग इंडिया में अपने कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयां ले रहे हैं उसकी वजह से ऑलरेडी मतलब कोएंजाइम Q10 के लेवल्स और भी ज्यादा कम हो जाते हैं। So there's a very significant need in very many people for more CoQ10 for good health. So बहुत सारे लोगों को CoQ10 लेवल्स को अपने बढ़ाने की जरूरत है। It's not only important for the heart, but also very important for the brain, the kidneys, the liver, the pancreas. It's just very important for every cell in the body. So CoQ10 जो है ना सिर्फ दिल के लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन ब्रेन के लिए, किडनीज के लिए, लिवर के लिए, पैनक्रियास के लिए हर जगह बहुत जरूरी है। It's a powerful antioxidant and restores vitamins E and vitamin C as antioxidants when they donate their electrons. तो ये बहुत जरूरी है विटामिन सी और विटामिन ई की बॉडी में प्रॉपर काम करने की शक्ति को मेंटेन करने के लिए। Another horse story. एक और घोड़े की स्टोरी है। This is actually a Frisian stallion from Holland. ये एक फ्रीजियन स्टैलियन है हॉलैंड से। They get so big that they tend to outgrow their heart and lung capability to supply them. इनका शरीर इतना बढ़ जाता है कि इनका जो हार्ट और लंग है वो इसकी शरीर की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता।
Arabian horses have very natural endurance and can run all day without a problem. अरेबियन हॉर्सेस की बहुत अच्छी एंड्योरेंस होती है, वो सारी दिन भाग सकते हैं बिना रुके. These can go about 10 to 15 minutes. ये जो है 10 से 15 मिनट आराम से जा सकते हैं. This is a show horse we have, and he's competed very well. And we entered him in the World and National Horse Show this year to compete. ये बहुत ही एक अच्छा शो हॉर्स है, इसको हमने वर्ल्ड शो हाउस में compete करने के लिए रखा था अभी. But well before we did that, I started giving him CoQ10. लेकिन वहाँ जाने से पहले मैंने उसको टाइम से कोएंजाइम ग्लूटेन देना शुरू कर दिया. 10 times the amount I'd give a human. जो नॉर्मल ह्यूमंस को देते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा. And I noticed after 2 days, he recovered faster. और मैंने क्या देखा कि 2 दिनों बाद इसकी रिकवरी बहुत फास्ट हो गई. So it allowed us to train him more and harder because he was recovering faster. तो हम लोग जो है उसको ज़्यादा ट्रेन कर सके बहुत फास्ट क्योंकि इसकी रिकवरी अच्छी हो गई. In a horse show, a very highly competitive horse show, a Frisian usually will compete in no more than 8 events. एक अच्छे हॉर्स शो में एक फ्रीजन जो है वो 8 से 10 इवेंट से ज़्यादा compete नहीं कर सकता. But we took him to this major show and we entered him in 29 events. और हम इसको एक मेजर शो में लेके गए और उसको 29 इवेंट्स पे रख दिया. And he was as good at the end of the show as he was at the beginning. और उस शो में अपने लास्ट इवेंट पे भी वो उतना अच्छा था जितना फर्स्ट इवेंट में था. He actually broke every career record for this breed of horse in history, and he's only 6 years of age. They usually can compete to 12 to 14. उसने अपने कैटेगरी में अपनी ब्रीड के सारे करियर रिकॉर्ड जो थे वो तोड़ दिए थे और सिर्फ 6 साल उसकी उम्र है और ज्यादातर ये 12 या 13 साल की उम्र तक compete कर सकते हैं. But I know a lot of it had to do with what he was nourished with and supplemented with. लेकिन मुझे पता था कि उसका जो राज है वो क्या है कि हमने उसको बहुत सारे अच्छे सप्लीमेंटेशन दिए थे और उसको पहले से तैयार किया था. And I truly believe, and I'm going to find out, I truly believe that he will live longer because I'm supporting his heart in a different way. और मुझे ये उम्मीद है और मुझे पता लगेगा धीमे-धीमे कि ये एक्चुअली काफी लंबी आयु तक जिंदा रहेगा क्योंकि उसका जो हार्ट है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं CoQ10 से. Another thing that we'd like to talk about is free radicals. हम बात करना चाहते हैं फ्री रेडिकल्स के लिए. I know you know a lot about free radicals, but I want to just cover a couple of things. मुझे पता है कि आप लोगों को फ्री रेडिकल्स के बारे में बहुत कुछ पता है लेकिन मैं कुछ चीजें कवर करना चाहता हूँ. Free radicals are abnormal molecules that lack an electron. फ्री रेडिकल्स जो होते हैं एक एबनॉर्मल मॉलिक्यूल होते हैं जिसका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कम होता है. And they become very active because they're unstable and try to steal an electron from a neighboring molecule. और वो बहुत ही एक्टिव होते हैं क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को वापस चुराने की कोशिश करते हैं किसी और मॉलिक्यूल से. When they steal that electron, then that molecule tries to steal it from the next. जिससे चुराते हैं वो किसी और से चुराने की कोशिश करता है. And that becomes a chain reaction of millions of molecules in very small fraction of a second. और वो एक चेन रिएक्शन होता है मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स में बहुत कम समय के अंदर. It's thought that that reaction can actually damage very important chemicals like DNA. और उससे हमको लगता है कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डैमेज हो सकती है, खतरनाक डैमेज होती है डीएनए को. And may actually be a cause of cancer cell formation. और इससे कैंसर सेल्स जो होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं हमारे बॉडी. Now lots of normal processes are associated with free radicals. बहुत से प्रोसेस ऐसे हैं जो फ्री रेडिकल्स से जुड़े हुए हैं. Just normal metabolism in our body is associated with free radicals. जो हमारा नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है बॉडी में वो. But other things are also associated with it too. कुछ और चीजें भी हैं जो जुड़ी हुई हैं उससे. Radiation from the sunlight or X-rays. रेडिएशन जो है जो सनलाइट से आता है, एक्सरे से मिलता है हमको. Alcohol, smoking, both cause Alcohol. free radicals. और स्मोकिंग जो है उससे भी फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं बॉडी में. And even extreme exercise causes free radicals. और बहुत ज्यादा हद से ज्यादा एक्सरसाइज करना उससे भी फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं हमारे बॉडी में. Now what antioxidants do is that they donate electrons to stop that reaction from occurring. जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ताकि वो रुक जाए, थम जाए. Now if we were to look back, we've already talked about a lot of antioxidants today. तो आपने देखा होगा कि अभी तक हम बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में आपको बता चुके हैं. Both vitamins, minerals, and herbs. विटामिन्स, मिनरल्स और हर्ब्स. One more class I'd like to talk about are the class of carotenoids. और मैं आपको एक और फैमिली के बारे में बताना चाहूँगा, कैरोटीनॉइड्स के बारे में. Beta carotene actually is the precursor to vitamin A, and the body forms vitamin A as needed from beta carotene. बेटा कैरोटीन जो है वो एक प्रकार का प्रीकर्सर है विटामिन ए का और बॉडी जो है वो विटामिन ए बनाती है बेटा कैरोटीन से. Alpha carotene and lutein are also part of that family. अल्फा कैरोटीन एंड ल्यूटिन जो है वो भी उसी फैमिली का एक हिस्सा है.
The natural sources are orange and yellow fruits and vegetables. इनके जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो पीले और ऑरेंज कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं. But these are involved in, these free radicals are involved in a number of things, including aging, heart disease, cancer, and diabetes. लेकिन ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस से में शामिल है, जैसे एजिंग है, बुढ़ापा है, हार्ट डिजीज है, कैंसर है, एटसेट्रा. These are a fat-soluble antioxidant and actually work then in the fatty tissues. ये जो है फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे फैटी टिश्यू में जाके काम करते हैं. Last thing I want to talk about is prostate health. और लास्ट में मैं बात करना चाहूंगा प्रोस्टेट के बारे में. As men age, the prostate gradually enlarges जैसे जैसे मेन एज करते हैं तो उनका प्रोस्टेट जो होता है वो बढ़ जाता है साइज में and can cause a variety of annoying symptoms. और उससे बहुत सारे अनोइंग सिम्टम्स हो जाते हैं बॉडी के अंदर. Frequency of urination, बार-बार बाथरूम जाना, waking up at night to urinate, बीच में रात में उठ के बाथरूम जाना, poor stream, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे से ना कर पाना, difficulty even emptying the bladder. पूरा ब्लैडर जो है वो एम्प्टी ना होने की फीलिंग. Some herbs can be very effective at decreasing those symptoms. कुछ हर्ब्स जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है उन सिम्टम्स को कम करने के लिए. Saw palmetto, nettle root, and pumpkin seed have all been used and have shown to be beneficial. सॉ पाल्मेटो, नेटल रूट और पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज. A study done by the Urological Sciences Research Foundation, which was one of the longest, best controlled botanical studies around having to do with these herbs, tested a combination of those herbs and found it to be a very successful product for reducing symptoms. यूरोलॉजिकल साइंसेज रिसर्च फाउंडेशन की स्टडीज थी जिसमें उन्होंने इन सब हर्ब्स का जो कॉम्बिनेशन था उसको स्टडी किया था और उन्होंने पता लगाया कि ये सब चीजें जो है बहुत जरूरी हैं इन सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए. So let's summarize what we talked about. तो हम लोग समराइज करते हैं कि संक्षेप में कि हम लोगों ने क्या बात करी आज. We talked about the definition and the elements of optimal health. हमने एक आदर्श स्वास्थ्य ऑप्टिमल हेल्थ की डेफिनेशन और उसमें क्या-क्या चीजें हैं शामिल उसके बारे में बात करी. We explored some of those elements of optimal health in more detail. हमने कुछ चीजों के बारे में और ज्यादा गहराई से बात करी. We talked about some of the aging theories briefly. हम लोगों ने एजिंग थ्योरीज के बारे में बात करी. Mentioned the qualities of healthy aging. हम लोगों ने बात करी कि अच्छा एजिंग जो है उसके बारे में क्या क्वालिटीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. We looked at the population distribution in India, both now and what it looks like in the future. हम लोगों ने बात करी कि इंडिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसी अभी है और क्या होने वाली है. We discussed some of the health issues that occur with aging and found that a number of those issues have application to your population in India. हम लोगों ने कुछ हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करी जो एक एजिंग के प्रोसेस से जुड़े हुए हैं और हमने बात करी कि वो चीजें इंडिया में मौजूद किस प्रकार से हैं. And then we talked about the lifestyle changes and some of the supplements that actually can make a difference. फिर हमने बात करी कि ऐसे कौन से लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स हैं और सप्लीमेंट्स हैं जो कि हमें उन चीजों से लड़ने में मदद करते हैं. So I know I covered an awful lot of material and I apologize for having to cover so much in such a short period of time. मुझे पता है मैंने बहुत सी चीजों के बारे में बात करी है और मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैंने इतना सारा कुछ कवर किया अपने कम समय में. But the importance of it for your nation is enormous. इसका जो इम्पैक्ट है हमारे देश पे वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट. Hopefully you've learned some things that will actually benefit not only your health but will benefit the health of many people that you come into contact with. हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी चीजें सीखी जिससे ना सिर्फ आप अपनी हेल्थ लेकिन अपने आसपास लोगों की हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं. Thank you very much for your attention.